Hello students, how are you? So I think we should begin. So yesterday we were doing we did the characteristics. We have drawn the characteristics of all the trigo functions, that is sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, and cosec x, right? So we have drawn them, and now we have also seen that what are the domain, what are the range, like that. So domain of the function, I just want to recall you, and range of the function for different. What is the domain of this function? It is R. What is the range? -1 to 1. Okay. What is the domain of this function? It is R. What is the range? -1 to 1. Similarly, what is the domain? It is R minus 2n plus 1 into pi by 2. Okay. And what is the range? It is all real. What is the domain? It is R minus n pi. What is the range? It is R set of real. What is the domain? The same as tan. That is R minus 2n plus 1 into pi by 2. What is the range? It is minus infinity to minus 1, union 1 to infinity. And finally, what is the domain for this? It is R same as cot, R minus n and pi. And the range is minus infinity to minus 1, union 1 to infinity. So is this clear to all of you? So that was something we did yesterday. Okay. So these are the trigo functions. Okay. These are the trigo functions. And I think today let's move to the different type of functions, and let's try to do the second. This completes your continuous domain functions. I mean, because there were two classes of functions. One was in which the domain is constant, domain is continuous, but in another set of functions we have a domain which is a piecewise. That means the function will be piecewise continuous and piecewise like this. चलिए अब हम आपको सेकंड क्लास की तरफ मूव करते हैं. सेकंड क्लास is your the second class of function is piecewise domain functions. Piecewise domain functions. In the piecewise domain function, the first function that happens to be there is your modulus function or absolute function. You see, it is absolute function, or this is also known as modulus function. Absolute function or your modulus function, right? So how can we represent that function? Look, so here the function is defined as fx is equal to mod of x. Okay, this is your modulus function. And you know that it is defined as x when x is greater than or equal to 0, I mean positive, and it is minus x when x is negative, minus x less than 0. And as you can see that y is equal to fx, you see y is equal to mod of x. So mod x can never be negative, so it has to be always positive. So y will be always positive, mind it. So therefore, this particular function will be we can represent this function like this. And then later we can modify the other functions as well. So this is my xy plot. Okay. So this is O, this is x-axis, and this is your y-axis. सबसे पहली बात ये है कि it's a piecewise function. See, for this domain, we have one function. For this domain, we have another function. That's why I call this as a piecewise domain function. Now, for different domains, we have the same function is split into two types, two forms, two functions. This function is now split into two functions for different domains. So for x greater than or equal to 0, we have y is equal to x. Y is equal to x means what?
an equation of a straight line passing through the origin with a slope of 45, slope 1. Is that clear? This is your 1. And at the same time, for x less than 0, it is minus 6 का मतलब हुआ minus x means like this. So you see here, for x positive, this is y is equal to x. For x negative, this is y is equal to minus x. Okay, is this clear? So this is the graph of y is equal to mod of x. And you can see that there is no value of y lying below the x-axis. That means the entire curve is confined in the first two quadrants, first and second, where y is positive. So as you can see that y is always positive. So what is the domain of this function? Domain of this function will be equal to all real, because you see that यहाँ पर x greater than or equal to 0 or x less than 0. So it's complete real set of, from minus infinity to infinity. And what is the range of this function? Range of the function will be from 0 onwards up to infinity, 0 inclusive and 0 to infinity. So this is your function mod of x, right? Did you understand, Sudha, Shishir, Smith, Rohan, Dhruv? Did you understand this thing? Is this clear to all of you? Smith, okay. Sudha, have you understood it well? Rohan? Okay, chaliye. So this is your first function, that is absolute function or the modulus function. Now, taking the cognizance of this function, we can, जितने भी हमने अभी तक functions पढ़ी हैं, so let us try to, modify them. Let us try to do the transformation in accordance with this modulus. Okay. सबसे पहला function हम क्या लेंगे? Y is equal to f of x is equal to, पहले हम लेते हैं कौन सा, अच्छा अब हम पहले आपको ये बताएंगे कि अगर हम मॉडुलस की बात ना करते, अब आपको दिखाएंगे मॉडुलस करो कैसे ट्रेस करते हैं. जैसे look at this, and this is my plotter, xy plotter, Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system, this is O, this is x and this is y. अगर मान लीजिए if we had a function like this, देखो ये mod हटा के what is there inside x, y is equal to x का मतलब होता है it's an equation of a straight line passing through the origin like this, isn't it? ठीक है. अगर हमें अब क्या करना होगा, if we have to draw the plot for the modulus of x, if we have to draw the plot for the modulus of x, what you will do is you will take the reflection of this particular line segment, मतलब कहाँ से minus infinity से 0 तक ये जो portion है इसका आप reflect करेंगे. You will take the image of this about x-axis and its image will be definitely this. And then what you will do is you will remove this particular portion. You will remove this particular part. Remove this. That means याद रखिएगा जब भी आपको इस तरह का ग्राफ प्लॉट करना होगा, पहले आप फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, उसके बाद मॉडुलस लगाना है तो जो नेगेटिव पोर्शन में ग्राफ है उसको रिफ्लेक्ट करके पॉजिटिव में लेके आइए, तो दिस विल गो एंड दिस विल कम appear. So this is the graph. As you can see, we have drawn the graph over here. तो अब आप मॉडुलस का किसी भी मॉडुलस का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पर आपको, अब हर तरह के फंक्शंस हमारे पास हैं, तो let me try to draw the function like this. अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, अगर मान लीजिए y is equal to f of x, एक algebraic एग्जांपल, ठीक है. y is equal to fx is equal to mod of x minus 1 into x minus 2. अच्छा, इसको अगर हमें प्लॉट करना होगा, क्या करना होगा? if we will have to plot this and इसका डोमेन और इसका रेंज फाइंड करना. देखो बहुत आसान है. सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर इस फंक्शन को प्लॉट करेंगे. देखिए जरा, Smith, look at this. It's a quadratic equation. इसके दो फैक्टर्स हैं कहाँ पर? That means इसके दो फैक्टर्स हैं या दो रूट्स हैं, ठीक है.
देखो इसका डोमेन या इसका रेंज कैसे, डोमेन तो आर है, इसमें तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको मालूम है अगर मॉडुलस नहीं होता तो ये फंक्शन ऐसा होता है x-1 और x-2। तो इसके दो जीरोस हैं, कौन कौन सा? एक तो है 1 और दूसरा है 2। ठीक है, इसका प्लॉट कैसे होगा? पैराबोला होता है ना इसका प्लॉट, आपको मालूम, मैंने बताया था आपको कि इसका प्लॉट क्या होता है, पैराबोला। एंड पैराबोला का ग्राफ कुछ इस तरह होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो है पॉजिटिव +1 है, तो मतलब इट विल बी कनकेव अप, इट विल बी कनकेव अप। ठीक है बेटा, दिस विल बी कनकेव अप। मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, एक मिनट ठहरिए। लेट मी ड्रॉ द प्लॉट फॉर दिस। दिस इज योर पैराबोला, परफेक्ट। नाउ अच्छा देखिए, बिकॉज पैराबोला के इसके दो रूट्स है, व्हेन x is equal to 1 it is 0, when x is equal to 2 it is 0। तो the shape of this graph will be like this। लेकिन जब हम मॉडुलस की बात करेंगे तो मॉडुलस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेगेटिव पोर्शन है ग्राफ का उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। जो नेगेटिव पोर्शन है, आई मीन y नेगेटिव, बिकॉज यू सी दैट y is equal to मॉडुलस ऑफ दिस, मतलब होता है y should be पॉजिटिव। तो लेकिन क्या करेंगे अब हम, ये वाला जो है ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ आएगा और ये हट जाएगा। सो द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विल अपीयर लाइक दिस एंड दिस। ये समझ आ गया आपको कि नहीं? The graph of this function will be like this, and you see that domain of this function is always set of reals। Yes, Smith, Swada, आपको समझ आ गया? Shishir, Rohan, Dhruv, Smith, did you all understand this? कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके, सो क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता है कि that there should be no portion of the function, no portion of the curve that traces in the third and the fourth quadrant, so therefore it should be in the first quadrant। Okay, is this clear? Good। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आप नोट डाउन कर रहे हैं साथ में सारे? आर यू एबल टू understand this thing? It's a very simple thing। So this will be the graph of this function। Okay, अच्छा अब देखिए, अब हम बाकी और कर्व्स को भी मॉडुलस के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, देखिए so shall I move to the next slide? Now y is equal to f of x is equal to, what is the next curve you can trace? That is mod of log x to the base e, mod of log x to the base e। देखिए अब मैं यहाँ पर पूरे ऊपर फंक्शन सारे लिख के रखता हूँ। नंबर 1, दूसरा होगा y is equal to f of x log of base e mod of x। Then we have y is equal to f of x log of mod of e mod of x। ठीक है बेटा, ये याद रखिए। अब हमें मॉडुलस देखिए बहुत जगह है, हमें इसको प्लॉट करना है, हमें इसको ट्रेस करना है। कैसे करेंगे ट्रेस? आप देख सकते हैं बहुत आराम से। सबसे पहली बात ये है कि log x का ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? log x का ग्राफ प्लॉट करो। वो तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को आता है ना? तो log x का ग्राफ प्लॉट करना कोई बड़ी बात नहीं है। You can always trace it। This is 0, this is real x's, and this is y। So the graph for the log x is, wait a second, it will be like this is the graph for the log x। Is that clear? लेकिन अब हमें mod of log x की बात करनी है। mod of log x की बात अगर हम करेंगे तो ये पोर्शन जो है ना, ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ आएगा। दैट मीन इट विल कम लाइक दिस and it will go like this। बात समझ आ रही है? It will strike here at 1 because log 1 is 0।
log 1 is 0. It is 1 here and this is 0. I hope it's clear to you. क्योंकि आपको मालूम है ये नेगेटिव में जो ग्राफ का पोर्शन है ये कहाँ रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ऊपर की तरफ. सो दिस ग्राफ इज mod of log of x to the base e. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट ग्राफ को प्लॉट करेंगे. कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप खुद देख सकते हैं. अब ये है नेक्स्ट log of e mod of x. mod of x का मतलब हुआ, इसने अब ओपन करा हमारे लिए. सबसे पहले log of x ही प्लॉट करेंगे. देखिए कैसे करेंगे log of x प्लॉट. ये तो हो गया बेटा आपका log of x. This is 1. लेकिन log is not defined for negative value. लेकिन ये तो पॉजिटिव है, ये तो चाहे कोई भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू में दे दीजिए, this will be always positive. इसका मतलब हुआ अगर हम -1 की बात करेंगे, log of -1 क्या होगा, log of e mod of -1, that is +1. So the graph of this function, इसका इमेज इधर की तरफ आएगा, like it will go here. Wait a second, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया. This is your -1. So this is the graph for log of f of x is equal to log e mod of x. Mod लगाने से हमारे पास डोमेन पूरा आ गया. अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा? What is the domain of this function? ये तो पता है, ये डोमेन, ये तो domain of this function is equal to what? 0 to infinity. Okay. What about this? इसका domain of the function will be equal to what? कहाँ से कहाँ तक? -infinity से infinity पूरा, -infinity से infinity except 0. Because 0 पे function is not defined. बाकी it is defined for all the values from -infinity to infinity because modulus x के ऊपर modulus है. मेरी बात समझ आ रही है आपको? x के ऊपर modulus है. And इसका रेंज किसके बराबर होगा? रेंज ऑफ दिस फंक्शन किसके बराबर होगा? इट विल बी ऑब्वियसली 0 to infinity, 0 क्लोज, बिकॉज ये यहाँ पर 0 ऑनवर्ड्स ऊपर जा रहा है. इसका रेंज किसके बराबर है? रेंज विल बी इक्वल टू r. रेंज विल बी इक्वल टू r. Then the next one will be your see, it is log of mod x. तो ये आ गया log of mod x. अब इस पे मॉडुलस है तो ये नेगेटिव पोर्शन ऊपर जाएगा, तो मतलब क्या होगा? The curve will be one second. The curve will be like the curve will appear like this. It is +1 and it is -1. What about the domain of this function? It is same as this one. Domain is equal to -infinity to infinity except 0, and the range of the function will be equal to 0 to infinity. I hope it's clear to you, Sudha Smith. Everyone, do you understand this thing? ये समझ आ रहा है आपको कि हम देखिए वही ग्राफ log की बात करेंगे, लेकिन what we are doing is we are modifying the function in accordance with the absolute function or the modulus function that we have discussed just a little while ago, and based on that we are having the functions like that. अब हम अलग अलग तरह के फंक्शन देखो, मॉडुलस इंट्रोड्यूस हो गया. अब देखो हर तरह का फंक्शन अपने हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा, like this and this. मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी साथ साथ में बता रहा हूँ. सो ट्रांसफॉर्मेशन फिर हमें सेपरेटली नहीं करना पड़ेगा. वी विल बी डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन एट द सेम टाइम बिकॉज़ कर्व भी ट्रेस कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन भी साथ साथ में ले रहे हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? यस हो गया? क्लियर ना? रोहन, ध्रुव, सभी को समझ आ रहा है? ये ट्रेस किया आपने. शैल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? शिशिर, ओके. इसके बाद जरा थोड़ा सा हम एक्सपोनेंशियल के ऊपर जाएंगे.
Next one will be in our exponential. Okay, रोहन देखिए बेटा, fx is equal to e to the power x. तो सभी को पता है कि इसको कैसे ट्रेस करते हैं हम, आपको पता है ना, मैं आपको दोबारा से बता दूं. e to the power x और इसके अलग अलग वेरिएंट्स. e to the power x is plotted like this. You can see it is going to be, this is my graph. It's e to the power x. Here it is 0. This is 1. So I'm in x-axis. This is 1 and this is y-axis. Okay. So domain of this function, I'm just doing it, you know, again, because you know that domain is equal to R set of real, and range of this function is equal to 0 to infinity. Isn't it? 0 to infinity. Okay. So इसके बाद अब देखिए इसको हम मॉड इसमें कहां से आएगा, देखो f of x is equal to e to the power mod of x. इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. f of x is equal to e to the power minus mod x, इसका करेंगे. राइट, चलिए इन दोनों का हम ट्रेस करते हैं, प्लॉट करते हैं. अच्छा देखो इसको फंक्शन को मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखिए fx is equal to, यहां पर मैं दोनों आपको ग्राफ्स बना दूं, पहले e to the power x और e to the power minus x का भी, ताकि आपको मुश्किल ना हो अंडरस्टैंड करने में. e to the power minus x का ग्राफ कैसे आता है बेटा? सॉरी, this is e to the power minus x. It's a decaying. This is growth. This is decay. This is x-axis and this is y-axis. Okay. चलो जी, इसका भी डोमेन सेम है. Domain of this function will be equal to R and range of this function will be equal to 0 to infinity. Now my function is e to the power mod of x. You see that, इसको define कर लीजिए दोबारा से, कैसे होगा? It will be equal to e to the power x when x is greater than or equal to 0, and e to the power minus x when x is less than 0. Isn't it? अब देखिए ये सेपरेट हो गया है, क्योंकि मॉडुलस लगाने से ही, देखिए यहाँ पर मॉडुलस नहीं था तो फंक्शन वाज कंटिन्यूअस थ्रूआउट डोमेन, लेकिन यहाँ पर डोमेन ब्रेक हुआ, डोमेन बट गया, and उसके accordingly we have two functions now. When x is greater than or equal to 0, we have the function e raised to power x. When x is less than 0, we have the function this. Now you can see I'm just drawing the plot for this. अब हमें दो कर्व्स अलग अलग मिलेंगी for different domains. One will be here. देखो बेटा, x greater than 0 मतलब यहाँ से x greater than or equal to 0, हमारा फंक्शन क्या है? e to the power x. मतलब e to the power 0 किसकी बात आए? पहले हम 0 लोएस्ट वैल्यू देंगे, मिनिमम वैल्यू 0, e to the power 0 1. तो ग्राफ हमारा क्या होगा? मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, आपको फिर मैं बता दूंगा कौन सा पोर्शन कट करना है. ये आ गया e to the power x, लेकिन मेरा डोमेन क्या था? e to the power x तो ग्राफ था, लेकिन डोमेन क्या था? x greater than 0. तो मतलब क्या रिमूव करना पड़ेगा? We will have to remove this particular part. इसको हटाना पड़ेगा बेटा, हटाना पड़ेगा ना, ठीक है. और उसके बाद e to the power minus x for x less than 0. Minus x for x less than 0 कहाँ से आ गया? इधर से आ गया, ठीक है बेटा. So it is e to the power minus x. लेकिन इसका डोमेन क्या था? x less than 0. मतलब ये, तो ये पोर्शन तो नहीं आएगा ना. This portion will be clipped off, will remove. तो अपन का ग्राफ क्या होगा? ये यहाँ से आएगा, इधर से घूम के इधर से चला जाएगा. So this is the graph. ये जो मैंने हटा दिया इमेज, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ये वाला लाइंस को ब्रेक किया, तो this portion will not be included. So therefore this is the graph of the function. And accordingly, similarly, we have the third one. Fx is equal to e to the power minus mod x. You know what is that equal to? देखिए, for x greater than or equal to 0, ये तो mod x क्या होगा? x. So it is e to the power minus x. And for x less than 0, mod x क्या होगा? Minus x minus minus plus e to the power x. अब आप देख लीजिए इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे.
here. So it's x, this is y. This is x greater than or equal to 0 and this is x less than or equal less than 0. अच्छा देखिए सबसे पहले हमें दो ग्राफ्स को प्लॉट करना करिए e raised power x और e raised power minus x. ना ये अच्छा नहीं बना. We will draw the graph like ये कौन सा आ गया e to the power x और दूसरा स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं चाहिए हमें, ये तो थोड़ा स्ट्रेट लग रहा है. अच्छा देखिए ये आ गया e to the power minus x. अब देखो कौन सा रीजन हमें कट करना है. For x greater than 0 e to the power minus x, x greater than or equal to 0 e to the power minus x. मतलब यहाँ पर ये वाला ग्राफ हमें कंसीडर करना है, लेकिन ये पोर्शन जाएगा, ये पोर्शन हटेगा. कौन सा पोर्शन? ये पोर्शन हट गया क्योंकि e to the power for x positive e to the power minus x ये वाला ग्राफ आएगा, तो ये रिटेन करना है, ये छोड़ना है. अच्छा for x less than 0 e to the power x यहाँ पर ये वाला पोर्शन हटेगा and this will remain. So ultimately your graph will appear like here and here. तो मैं इनका दोबारा से बनाता हूँ. So the graphs will look like this. The graph will come here. Sorry. The graph will come here, इधर और उसके बाद यहाँ से चला जाएगा. So ये है आपका e to the power mod of x, and similarly we can have e to the power mod of minus x, e to the power minus mod of x. और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? You can see ये यहाँ से इधर और फिर ये यहाँ से. So याद रखिएगा this is x and this is y, and ये है y is equal to e to the power minus mod of x. This is 0, this is 0. So what is the domain of this function? Domain to r. Domain of this function is equal to r, and range of this function किसके बराबर होगा? 1 to infinity. 1 close to infinity. What about this? The domain of this function will be equal to all real, and range of this function will be equal to what? 0 open, 1 close. 0 open, 1 close. ये आपका आ गया. Is this okay? देखिए मॉडुलस के आने से हमने हमारे पास कितने और सारे फंक्शंस आ गए और उनके डोमेन्स हमने आपको बताए, उनके रेंज हम आपको बता चुके हैं. ये आपको समझ आ गया? Yes. Write down in the chat box if you have understood it. Good. Rohan, आपको समझ आ गया? Smith, Shishit, Dhruv, have you understood it or not? Oh, Vivek, कितने बजे आते हो आप भाई? अच्छा, आप लोगों ने ये कर्व ट्रेस किए सारे? Shall I move to the next slide? Yes. Next slide पे मूव करें. Okay. You take your time. So much. Let me know if you have finished it or not, right? Because I'm just waiting for you. Done. Okay, so let's now move to the next one. So ये आ गया आपका exponential, आ गया आपका log. Now अब हम बात करेंगे
y is equal to mod of sin x. जैसे कि y is equal to mod of sin x, y is equal to mod of cos x. इसी तरह से कोई भी किसी का भी मॉडुलस आप कर सकते हैं, y is equal to mod of tan x and so on so forth. ये तो पता ही आपको, मॉडुलस का तो आपको अंदाजा हो गया, ज्ञान हो गया कि लाइक मॉडुलस का मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस का मतलब होता है कि क्या नेगेटिव पोर्शन को हटा के उसको रिफ्लेक्ट करवाना है पॉजिटिव इसमें. देखिए सबसे पहले आई विल जस्ट ड्रॉ वंस अगेन द साइन एंड कोसाइन फंक्शंस. जैसे यहाँ पर देखिए आप, कल हमने साइन का ग्राफ प्लॉट किया था. आप देखिए साइन का ग्राफ हमने प्लॉट किया तो इट वाज लाइक इट्स लाइक हियर दिस. ओके, यहाँ से भी आएगा तो अच्छा. देखिए अब क्या करेंगे, अब साइन में यू विल सी दैट इन साइन, अब मॉडुलस ऑफ साइन में क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ साइन एक्स, ये तो पूरा साइन एक्स है. मॉड ऑफ साइन एक्स का मतलब हुआ ये पोर्शन, देखो यहाँ पर 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, and this is minus pi, this is minus 2 pi and like that. बट यहाँ पर ये पोर्शन क्लिप होके ये पोर्शन जाना है इसको, क्योंकि मॉडुलस है तो ये पोर्शन ऊपर इट विल अपीयर लाइक दिस. ठीक है. सिमिलरली दिस पोर्शन विल गो एंड इट विल अपीयर लाइक दिस. नाउ द graph of the sine function will go, this negative part will go, it will come like this. ठीक है, and like that. So this is the modulus of sin x. ये समझ आ गया आपको कि नहीं? Is this clear to all of you? And similarly, we can have another one, that is y is equal to mod of cos x. And if we draw the cosine once again over here, if you draw the cosine here once again, the cosine function will be like this is my cos x, but जैसे कि आपको मालूम है, this is minus pi by 2, this is 0, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi and so on. इसमें हमें स्केल को हमें देखना नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि स्केल क्या है. like look, so what we have to do is you can remove this particular part, because modulus अगर हमें बनाना है तो then this will appear here. Similarly, this will go and it will appear like here. This will go and it will appear like here. Okay, this is mod of cos x. Clear with this? Right? उसके बाद we can have one more, that is tan x. And in tan x, yesterday we have drawn the plots, we have drawn the profiles or the characteristics of these trigo functions. देखिए, the tan curve was plotted like yesterday. We did it like this. Then it was
something like this, then it was something like this, then it was this way, and like that. Okay. Now, अगर हम बात करेंगे अब किसकी? Now, if we just talk about our this is 0, this is pi by 2, this is pi, this is 2 pi, 3 pi by 2, this is minus pi by 2, this is minus pi. Now, y is equal to mod of tan x means what is the graph? The graph of this function, this will go like, the graph of this function will appear like, बिल्कुल इसका हो इमेज, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बिल्कुल इसका हो इमेज आपका क्या बनेगा? यहाँ पर ये उठ के it will come down like this. उसके बाद ये उठ के it will come down like this. ये पोर्शन क्लिप होगा, right? So this is my mod of tan x, and many more other functions you can do them. You can take the modulus of many other functions like that. Now, did you understand this thing or not? ये समझ आ गया आपको? Yes. भाई ठीक है, समझ आ गया? Yes, Swada, Smith, Shishir, Rohan, Vivek, Dhruv. Is this clear to all of you? Yes? All right. So let's now take some questions now to find the domain. If we have, I mean, ये जो अपना modulus type का function है, इसके according इसके basis पे, let's take some examples to find the domain of the functions. Okay. Now, let me take this one, take this example, first of all. Okay, let's go to the next slide now. Now, there are certain problems we have to discuss. Number one, solve for x. Solve for x, that means to find the value of x, to find the domain of this function. What is the function? The first one is mod x minus 1, bracket close, mod x minus 2, bracket close, is less than or equal to 0. Is less than or equal to 0. What does this mean? इसका क्या मतलब हुआ? मॉडुलस ऑफ x minus 1 mod of x minus 2 less than or equal to 0. जैसे कि हम आपको बताते हैं कि like अगर मान लीजिए x minus 1 or into x minus 2 is less than or equal to 0, if we just draw the number line like this, और नंबर लाइन पे अगर आप इन दो zeros को प्लॉट करेंगे, one is 1 and second is 2, one is 1 and second is 2, so it is 1 and this is 2. अब आपको मैंने बताया हुआ नंबर लाइन को डेस्कोवेवी का मेथड और डिस्क्रीट साइन रूल की तरफ से, this is plus, this is minus and this is plus. Here it is less than or equal to. What does this mean? X इसका मतलब हुआ x belongs to 1, 2. X belongs to 1, 2. That is, इसका मतलब क्या हुआ? X is greater than or equal to 1, less than or equal to 2. I hope it's clear to you. मैंने आपको बताया हुआ last time. Because less than का मतलब और equal to sign का मतलब हुआ the extreme values. Endpoints will also be included in the included for the value of x. So x can be 1, 2, and all the values between 1 and 2. अच्छा यहाँ पर लेकिन मॉडुलस है, x के बजाय क्या है यहाँ पर मॉडुलस. So हम क्या लिखेंगे?
यहाँ पर लिखेंगे हम mod of x will be greater than or equal to 1, less than or equal to 2. अब यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी हमें. नंबर 1, एक तो मिलेगा हमें कि mod of x is greater than or equal to 1, और दूसरा है कि mod of x is less than or equal to 2. As you can see that mod का मतलब mod x 1 है, तो it's not x, it's mod x. Mod x का 1 का मतलब हुआ कि we have two values of x, एक तो +1 है, दूसरा -1 है, और यहाँ पर क्या है, mod x less than or equal to 2, इसका मतलब हुआ two values, एक +1 और दूसरा -1. तो if you can draw a number line, you mark 4, you label this and mark 4 points on it. Number 1 कौन सा? एक तो होगा -1, दूसरा होगा +1, एक होगा -2, दूसरा होगा +2. ओके अच्छा, एक और चीज याद आपको हमने बताया था शायद कि अगर mod x greater than 1 है तो इसका मतलब हुआ greater than or equal to 1. इसका मतलब हुआ close here 1 और 1 पे -1 और 1 पे close and it will go out of the bounds का मतलब क्या हुआ, it will go here, ठीक है ना, up to infinity, and this will also go here up to the infinity. ये समझ आ गया? This is out of the bounds. Greater than 1 का मतलब होता out of bounds. And second one is mod of x less than or equal to 2. मतलब हुआ कि like -2 से 2 within the bounds like this, and close here because it's greater than or less than or equal to, close here less than or equal to. Now the common region will be the value of x for this particular question. What is the common region? It is therefore x belongs to what? It is -2 to -1, close at both, and 1 to 2, close at both. So this is how we can find the value of x. I hope it's clear to all of you. So aapko samjh aa raha hai, Smith, everyone? Because if you remember, मैंने आपको बताया हुआ mod of x greater than or equal to a and mod of x less than or equal to a. Mind it. आप फिर से देखिए, अगर आपको याद नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ. Look at this. If we draw a number line, mod का मतलब दो values. Which are the two values? The two values are -a and +a. And greater than का मतलब हुआ out of the bounds. Out of the bounds का मतलब हुआ here out, including the value a, because यहाँ पर equal to sign अगर नहीं होता equal to sign, then it would be excluding. Okay. This out of the bounds. Okay. And look at this. इसका मतलब हुआ including this and including this. इसका मतलब हुआ what is the region? Minus infinity से -a and plus infinity से plus a to infinity. That is, this is mod of x greater than or equal to a. And similarly, if we have another number line, number line on which we can label the two values, what are those again? A and a. This is -a and this is +a. Okay, and mod of x less than or equal to a means between the bounds, within the bounds, and therefore we can have it like this. It's within the bounds, okay? And you can put a dot here, just mean that would indicate that a and -a is also included. So this is the region. I hope it's clear to all of you. Yes, come on, tell me. Swada, is this okay? Smith, Drew, every one of you, have you understood it or not? So this was the kind of question in which we had to find the value of x, but here was a modulus sign, and modulus we have discussed now today. That's an absolute function or the absolute value of the function. And so shall I move, or do you want to write down this particular one? Yes, Smith, tell me. Done? Fine. Every one of you, have you done it or not? Move. Okay, fine. Now we have another question. Look, second one. Mod x -1 upon mod x -2 is greater than or equal to 0. This is a rational function. You can say it is fx upon gx greater than or equal to 0. That means it should be positive and at the same time equal to 0. So this is something like fx upon gx
fx upon gx greater than or equal to 0. This would be treated as same as fx into gx greater than or equal to 0. But isme, the only thing that we need to do is gx should not be equal to 0 for any value of x. Any value of x. अगर आपको लग रहा है कि ये रैशनल फंक्शन है, नो, आप इसको fx into gx भी लिख सकते हैं, बट लेकिन उसमें आपको you will have to exclude the 2 points. One, जिसकी वजह से ये gx जो है 0 बनता है. अब gx 0 कैसे बनेगा? It will become 0. देखो, mod x minus 2 will become 0 for both two values of x. One is plus 2 and second is minus 2. This could be treated as same as mod of x minus 1 into mod of x minus 2 greater than or equal to 0. But bear one thing in mind, that the denominator we have taken up there in the expression, and but you have to be quite sure about it. Like we cannot include the 2 points, which will make gx equal to 0. Now, if we draw the line like this, just drew it like this. Again, we have it's a greater than 0. So greater than 0 का मतलब क्या हुआ? Look, आपको मालूम है, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ. सॉरी, ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल लेते हैं, x minus 1, x minus 2 greater than or equal to 0. So we will, first label, we'll just place the points. I mean, label the points on this number line as 1 and 2 in the descending order, and this is plus. We become method plus minus plus. Now this time it is a positive greater than equal. So therefore, it becomes so value of x belongs to minus infinity to 1 close union 2 to infinity. Okay, this is the value of x which actually satisfies this inequality. But लेकिन यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर हमारा क्या है? Mod x minus 1 and mod x minus 2 greater than or equal to 0. So इसका मतलब क्या हुआ? You can plot the points. कौन-कौन सा point है? Yes, आप देख सकते हैं, इसमें दो चीजें हो सकती है. One, mod x will be greater than or equal to 1 and mod x greater than or equal to 2. एक possibility ये है. दूसरा होगा mod x less than or equal to 1 and mod x less than or equal to 2. दो possibility हो सकती है. यहाँ पर equal to 2 नहीं होगा. I'm sorry, because ये denominator में था, इसको inequality यहाँ पर जोड़ दो. So it will be just greater than 2 and just less than 2. So you can draw the plot. Number 1, mod x, इसके दो values आ गए, -1 plus 1 and ये आ गया -2 plus 2. Look at this. Mod x greater than or equal to 1, मतलब out of the bounds, close here, out of the bounds like here, and mod x greater than 2. Greater than 2 means out here, and out here. So therefore, what could be the इसमें क्या होगा? देख सकते हैं आप कि ये होगा माइनस इन्फिनिटी से -2 और दूसरा नंबर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, और है ना बीच में दो केसेस हैं, इसके बनेंगे दो केसेस. अच्छा, उसके बाद दूसरा केस क्या होगा? दिस इज -1, दिस इज +1, this is -2, this is +2. Now tell me, mod of this is bounded between -1 and this is open here. So what is the region that we can take common? देखिए, यहाँ पर क्या होगा? It was -infinity to -2 open union 2 to infinity. Second here is what? यहाँ पर कॉमन रीजन क्या आ गया? और it will be -1 to 1. ठीक है, -1 to 1. So therefore, what will be the -1 to 1? ये तो close होगा बेटा. This will be close. Wait a second, मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर proper देखिए, और -1 to 1. ठीक है. So therefore, और का मतलब हुआ union. So therefore, x belongs to, एक तो होगा -1 to 1
union with minus infinity to minus 2, union 2 to infinity. So this will give us the value of x. That will satisfy this. अब आप कोई भी देखिए इसमें से कोई भी एक value that will always make it positive without any doubt. Is that okay? Is this clear to you guys? ये समझ आ गया आपको? Yes, Smith. Have you understood it or not? Swada, आपको समझ आ गया? Is this clear to all of you? Rohan? Shishir, Swada, Vivek, Dhruv, सभी को समझ आ गया? So have you noted it down? Okay, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? Let me give you a question now. The next slide. That question is quite simple. Find the domain of the function where the function f(x) is equal to 1 upon square root of mod x minus x. इसका domain बताइए. So it's an irrational function, and inside the irrational function there is a modulus also. अब जितना हम आगे functions की तरफ मूव करेंगे, the complexity बढ़ता जाएगा क्योंकि more and more functions will be more and more type of functions will be involved with the same x. Okay, वही x होगा लेकिन उसको लपेटेंगे हम अलग-अलग functions में और फिर वो थोड़ा और ज़्यादा complex बनता जाएगा because that's actually what we have to go. Okay, so get this done. इसको कर लीजिए and get me the answer for this one question. सौदा बताइए कि कब कैसे होगा ये. Yes, Smith, answer me quickly. Yes, हो गया. सौदा आपका आ गया. No? सबसे पहली बात ये है कि देखिए ये डिनोमिनेटर में है और ऊपर से स्क्वायर रूट के अंदर, तो mod of x minus x should be just greater than 0, not equal to 0 because this is not in the numerator. This is the denominator because अगर equal to 0 लिखेंगे then the function will not be defined. So therefore mod of x will be just greater than x. So when this will be possible? Only देखिए अगर x is greater than, अगर x belongs to greater than, I mean 0 to infinity, क्या ये possible होगा? No. Because 0 to infinity में क्या होगा? 1 modulus of 1 will be greater than 1. Mod of 1 क्या होता है? 1 ही होता है, greater than 1. ये possible है? No, not way. अगर हम लेकिन दूसरा लेके x belongs to minus infinity to 0, वैसे 0 तो open है, ठीक है? Minus infinity to 0, तो मतलब इसमें क्या क्या वैल्यू आ सकता है? -1. x is equal to, मान लीजिए -1. So mod of -1 is greater than -1. Mod of -1 क्या होगा? 1 is greater than -1. Of course, yes. So therefore, this is defined when x is less than 0. Therefore, the domain of this function will be equal to minus infinity to 0. आप देख सकते हैं खुद ही. 0 to infinity में तो defined नहीं है ना, possible नहीं है, because mod of 1 greater than 1, mod of 2 greater than 2 possible नहीं है. But अगर हम लेंगे
any value in the domain minus infinity to 0, that means -1, -2. So जैसे minus mod of -3 किसके बराबर होगा? Greater than -3. ठीक है? I've chosen x is equal to -3 in this particular type. So mod of -3 is greater than 3. I mean, it's 3. Will be greater than -3, but ये तो true है because 3 is always greater than -3. So therefore, this will be the domain for this function. Is clear? ठीक है? आपको बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, is this clear to you guys? ये समझ आ गया कि नहीं? Just let me know. आपको स्वतः समझ आ गया? सभी को समझ आ गया? चलिए ठीक है, आज बस इतना ही बिकॉज 6:16 हो गया. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आप करते रहिए तब तक क्वेश्चंस अपने. ठीक है, इस पे आई कैन जो आपका मॉड्यूल मिला है, सो बेस्ड ऑन दैट यू विल मॉड्यूल में तो डिड यू गॉट द मॉड्यूल?